Good morning students, this is Shivani Kumari here, your teacher of English, and I will continue the chapter 6 in this video. So in the previous video we have completed the page number 66 till the page number 66, and I will continue the page number 67 from this chapter. Okay, sing word sing. Sing bird sing. Okay, this is the chapter number and the name. Now I will solve the question number D. I have already told you the meaning of the words that is given on the word wall. Okay. Now we have some drawings which is related to this word wall. What we have to do? We have to choose the correct one to fill this. Okay, here we have the picture of pencil, and we also have a pencil word in this word wall, so we have to write the pencil. Then we have a picture of cord, cycle, and the clap. Okay, so this is all we have in this question number D, and I think you guys can solve this by your own self. I will not do that. I will solve the question number E from now. So here we have fill in the blanks with words from the box. Okay, question number E. Fill in the blanks with words from the box. Okay, fill in the blanks with words from the box. Here we have our words: houses, hotel, pilot, country. These are the given words which we have in this question number E. So we have total 4 words which has given in this particular exercise. Okay. Now I will solve the question number 1. In the one we have like this: words in a dash. Then we have number 2, a dash, flies, and no, not like this. Look, here we have some pictures with this fill in the blank section, but I will write the name of this given pictures. Okay. Shape, words in a dash. Then a fly, a dash, flies, and aeroplane. Number 3, a soldier, guards our dash. Number 4, a worker, engineer, drills. So this is all we have in this E number, but we don't have the name shape soldier. Here we have a picture of a shape and soldier, but I can't draw. That's why I have written the name of that particular person. Okay, now what we have to use? We have to use this given words to fill these blanks. Shape words in a
प्रोफेशनली तौर पे खाना बनाते हैं। ओके, घर में मम्मी लोग खाना बनाती है, होटल्स में छोटे मोटे ढाबा में हलवाई बनाते हैं, बट अब जब जाओगे इधर 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, 4 स्टार रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे बड़े बड़े शेफ जो कि प्रोफेशनली कुक करते हैं, सिर्फ इंडियन नहीं और सारे खाने अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड में खाने, उन सारे को उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने सर्व किया हुआ है। तो बड़े बड़े होटल में खाना कौन बनाते हैं? शेफ। तो शेफ वर्क्स इन अ होटल। एरोप्लेन, हवाई जहाज कौन उड़ाता है? मतलब जो इस काम को करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो हियर वी हैव पायलट। ओके, जो जहाज उड़ाते हैं उन्हें हम पायलट बोलते हैं। देन वी हैव सोल्जर गार्ड्स आवर कंट्री। एक सैनिक हमारे कंट्री की क्या करता है? रक्षा करता है। देन वी हैव आवर इंजीनियर बिल्ड्स हाउसेस। यहाँ पे मोस्टली होना चाहिए था आर्किटेक्चर, बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका क्या है? ए है। ओके, ए है, तो ए है तो यहाँ पर क्या होगा? आर्किटेक्चर तो नहीं होगा, क्योंकि ए के आर्किटेक्चर के साथ क्या लगता है? ए एन। क्या लगता है? ए एन। तो ए एन था नहीं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे इंजीनियर लिख दिया। ओके सॉरी, इंजीनियर के साथ तो नहीं लगेगा। एंड इंजीनियर बिल्ड्स हाउसेस। आर्किटेक्चर इंजीनियर्स, इनका काम भी क्या होता है? हमारे घर को बनाना। अगर आप एक अच्छा मॉडरेट और काफ़ी प्लेस के हिसाब से, जमीन के हिसाब से टेबल बनाते हो, तो आपको एक इंजीनियर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके ज़मीन के हिसाब से एक अच्छा घर, सुटेबल घर, और कहते हैं ना अर्थ को एक प्रूफ घर बनाकर देता है। सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस ई नंबर। नाउ आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर F from the page number 68. Look, what we have in this F number, in this F number we have circle the correct words. Okay, circle the correct words. So let's see what kind of words we have in this number F. Robin Redbreast loved to sing or hop. Number 2, the slope of a hill is called a hillock or hillside. Then we have number 3, a doorsill windowsill is the bottom of a window. Is the bottom of the window. Number 4, a garden
is an open area surrounded by walls. Number 4. The home of a king is called bungalow. Palace. Number 6. We cook food in the bedroom. Kitchen. Look, so here we have total 6 sentences in this particular chapter.